I know a lot of you are going to be traveling later today, so thank you for making the time and coming here and sharing this very, very important experience with us. It's great to have you guys. कर ले बेटा, कर ले, तोड़ दे सब कुछ. ऐसी picture बनाई है. And obviously great to see you again, brother. We go back a long way. We've known each other from college. So before we start doing anything together, we always first reminisce for 10 minutes about the past. He's usually bitching about me, and I'm defending myself. But it's great to be here. Bloody Daddy is. I mean, it's something that we planned almost 3 years back. This was pre-COVID. Actually, just when COVID had started, and it was very difficult to make films of a certain size and scale. So me and Ali kind of wanted to make this film, but we were wondering how to make it. But somehow he has a great production team, and we were able to make this film in one go at a time when shooting was very, very difficult. So it's a very cherished film of ours. We worked very hard to make it. We had many challenges that we faced. But the best part is when you see the product and you feel like none of that shows. Ali's a fantastic filmmaker. He understands this genre better than I do. So it's a privilege for me to have him help me in this film. It's my first actioner, and it is designed for OTT. I saw a lot of comments when the teaser came out that, why aren't you putting this out in the theaters? And trust me, we were all tempted. But this is designed for OTT, and it was meant to be for that kind of a platform. And of course, no better platform than Jio. So we're very, very fortunate that this film will be coming out right after IPL, when all the eyeballs are on, Jio Cinema. And can't wait to share the film with you guys. This is the first time we've shown the trailer. I'm so glad it wasn't on a phone and it was on a nice big screen, because that's where, it's fun to see an action film. And I hope people will watch it on the biggest possible TV back home. But yeah, that's it. I mean, I'm going to keep going on. Love it, man. He's giving everything. I feel like a round of applause. Because it just spoken about how it was being made and out of heart. So yeah, it's in front of you now. And on 9th of June, it will be out streaming for free, which is a very big thing. And thank you everyone at Jio Cinemas, Jyoti Deshpande, who's also the producer. And there are 2 more other producers, सुनील एंड गौरव, who are not here. जिन लोगों के पास काम नहीं है वो आज स्टेज पे हैं, जो सब काम कर रहे हैं वो आए नहीं हैं. So this is the reality of the situation. And yes, please have a seat, sir. We'll chat a little bit. And like you said, there'll be an extended session with the media for a few minutes. Extended rakhenge, But congratulations, sir. It's looking fantastic. Watching it. You're going to break the internet, Shahid, with this, if that happens. But footfalls, we've always talked about ki kitne log aapke dekhne. So it must really excite you as a filmmaker to come directly there on a platform that is giving these kind of numbers. Yeah, 100%. See, as a filmmaker, as a storyteller, what you want the most is that your content should get watched. And one thing we are very clear that now OTT is a platform where a lot of people come in and watch, and the content that you watch here is a very personal viewing. What we understand from numbers is, if as Shahid said, this 2.5 crore people, and if per television set even 4 people are watching it, the visibility and the penetration for you as a storyteller, Shahid as a star, becomes huge. And that is where the word is going to eventually go. And this is just the beginning of it. And with Jio Cinemas doing this with IPL, bringing cricket and cinema both free to you, I think they've hit it in the middle of the bat. And he's going through a brilliant purple patch. Brother, it's like a dream the last 3-4 years, Daddy. No, that's the context. I think the context is that, वो गाना है ना, सीधी कर गल करा, real talk. I'm the real boss. So, daddy is a word you use in that context as well. The rest of it, when you see the film, I'm sure you'll understand why the word is there. And bloody to abhi to blood to dikh hi raha hai. But I don't want to talk too much. But जब आप film देखेंगे तो it will be clear why that word is there. But it's also used in terms of like with attitude and style, like in that, like Big Daddy, like in that way. Is there any song in this movie? Ali, is there any song in this movie? Yes. Do I feature in that song, Ali? Do I get to dance in your film? It's a different film than the film that I've done before, because
देयर इज सॉन्ग, गाने हैं, लेकिन वो गानों का पिक्चराइजेशन बहुत अलग तरह से किया गया है. जैसे आपने देखा ट्रेलर में, द स्टोरी इज अबाउट वन नाइट, व्हाट हैपेंड इन दैट वन नाइट इन दैट होटल. सो गाने हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको गाने भी मिलेंगे, बहुत सारी कॉमेडी भी मिलेगी, कोकी कॉमेडी मिलेगी, दिल्ली की एक्शन मिलेगा. So there's a lot in the film that is packed in 2 hours. And my favorite song in the film is the one on which I am actually doing action and not doing dance. So I thought that was a really cool idea. He said, "Sir, we're making an action film. We're going to be pure, and I'm going to give you a song, but you're going to be doing action on it." So I thought that was super cool. Yes. The amount of authenticity which Indian movies bring in action, it gets overshadowed. So do you think a film like Bloody Daddy can bridge that gap and, you know, bring out that potential in the Indian movies when it comes to action genre? देखिए, फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर देगी, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है. जैसे अली ने कहा कि दिस इज मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, OTT gets consumed, you know, everywhere simultaneously. तो ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजुअली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है. इसमें बिकॉज हम एक सर्टेन जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, वी हैव गॉन मोर टुवर्ड्स रियल, बट उस रियल के अंदर अली का फ्लेवर तड़का आते रहता है. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी एंजॉयबल कि ऑन वन हैंड ऐसा भी है कि आपको लगता है ये एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है यार ये सिर्फ फिल्मों में हो रहा है, बट उसका जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है, जो एक मजा आता है कि अरे यार मजा आ गया. आई थिंक इस फिल्म में उन्होंने उसको कंबाइन करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग USP फॉर द वे द एक्शन. दैट्स व्हाई ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुकिंग फिल्म. इट हैज वेरी फ्रेश काइंड ऑफ विजुअल ग्रामर, सिनेमैटिक ग्रामर, और एक्शन ग्रिटी मुझे भी पर्सनली पसंद है. अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मजा भी नहीं आता. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और जो हिंदी फिल्म दे सकती है ना, वो हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकती. शायद हम थोड़ा सा भूल गए कुछ टाइम से, लेकिन यू नो वो आएगा. अच्छी फिल्में आएंगी तो वो फीलिंग वापस आएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके यू नो चाइनीज खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है, दाल मखनी जो होती है ना, दाल मखनी होती है, उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है. तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा, हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, which is what I really like about this film. In fact, you know, if I may just add, and I really like when he says that there is no tall claim, or there is, you know, it's very nice that when your film on the public domain is compared or drawn a parallel to a nice action flick, you know, and they're comparing it. But the whole idea for them to partner, you know, in the creative energies was the relentlessness in the action, which I feel has not been seen lately, and especially when everybody is confined to home. तरह के एक्शन होते हैं जैसे अली ने कहे हैं, बट आई फील दिस इज अ लिटिल जॉनर ब्रेकिंग, एंड वो रिलेंटलेसनेस जो है, इफ दैट कम्स आउट वेल एंड इफ ऑडियंस इज ग्रिप्ड, जॉब हाफ डन. हेलो सर, हिमांशु थिएटर में आनी चाहिए, ठीक है. और 90% कंफ्यूजन ही यहाँ हो रहा है कि अब जब हम सर्टेन फिल्में बना रहे हो, वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर रही, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चर फ्लॉप हो रही है. पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं आई. एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है. हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक कहानी है, क्या उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक OTT प्लेटफॉर्म पे होगी जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है. व्हेन आई से OTT, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते, OTT आप अपने फोन पे देखते हैं, अपने आईपैड पे देखते हैं, या अपने टीवी पे देखते हैं जब आप अकेले होते हैं. और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद हो, आपके भाई को पसंद ना हो, आपकी वाइफ को पसंद ना हो, आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो, उनको कुछ और OTT पे पसंद आ रहा हो. सो ये पूरा एक साइंस है, उस साइंस को आपको अडैप्ट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से कहानियां कहनी पड़ेगी. एंड द नंबर्स विल गिव यू द वैलिडेशन कि वो काम लोगों को पसंद आया या नहीं आया. इट्स नेवर क्वांटिफाइड कि 100 करोड़ क्लब में आई, 200 करोड़ क्लब में आई, 300 करोड़ क्लब में. दैट्स नॉट द वैलिडेशन ऑफ सक्सेस एनीमोर व्हेन इट कम्स टू OTT. ये सवाल इसलिए आ रहा था क्योंकि मतलब शाहिद जिस स्ट्रेचर के, एक सेकंड, माइक चिल्ला के बोल दो. ये
के मत चिल्ला दो। एक्चुअली ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मतलब शाहिद जिस स्टैचर के हैं एक्टर स्टार हैं वो 40 करोड़ ट्रेड कहता है कि उनकी फीस है। ठीक है, दे दो मुझे यार। कम बोला आपने, कम बोला है, आपको बाद में मिलेंगे। सर ये है कम बोला है, ये कम बोला है, इसका प्राइस पहले पता करो जाके। डेफिनेटली। तो ये फिल्म मतलब उस हाई स्केल बजट की है, ठीक है। तो क्या ओटीटी इस तरह की फिल्म को 100 करोड़ दे रहा है या मतलब क्या कह सकते हैं? नहीं सर, हमने सबसे भाड़े पे लेके जियो को फ्री में दे दी बच्चा। जितनी लागत है, जितनी जरूरत है, उतना ओटीटी दे रहा है। आपको क्या लगता है आईपीएल फ्री में आ रहा है, कितने का है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं, हम दुखी लग रहे हैं या खुश लग रहे हैं? सिंपल बात बताओ। अभी लुकिंग अनहैप्पी कि यार कहाँ फंस गए यार, क्या हम लग रहे हैं खुश? बताओ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो जवाब मिल गया तुझे यार। पैसों की बात नहीं करते, पिक्चर की बात कर लेते हैं। पैसे तो सब तुम्हारे। और कोई सवाल? मैथमेटिक्स में मत घुसो। I made action film with Mr. Salman Khan. I always want to do the character first and then bring the actor in. So, and that is why, you know, when I work with him, a lot of people say that it's a very good marriage of an actor and a director. With Shahid, when I came to him, I made a call. It was COVID. I was in Dehradun. He was in Bombay. We were jamming. After Kabir Singh, he called me. He said, "Ali, kuch karte hain saath mein." We were talking about a sports film together. Then when I got Bloody Daddy actually is an adaptation of a French film, okay, which is called Sleepless Night. I saw the film. Sunir actually, Khetarpal, who I think right now is in Cannes because he's more glamorous than us, called me and said, "यार एक मेरे पास picture है, तो please बनाएगा." So I saw the film, and I really liked the film. And why I liked the film is because it was like a trip, you know, an action film which is relentless, moving really fast. But you know, when you do a remake, you know, what is very important is that you need to find a zameen for that film. You need to find a land. And I was very clear कि अगर मैं इस फिल्म को दिल्ली गुड़गांव में सेट करूँगा ना, तो मुझे एक जमीन बहुत अच्छी मिलेगी. And film is set in the time of COVID, so the COVID line in the film is not a joke. It is set in the time of second wave. And when I was happy with the adaptation, I could only see one actor in that role because the original actor in the film is a brilliant actor and he has a lot of intensity in his eyes. So I said, there is no other actor who can justify this role apart from Shahid because I just feel he is an actor star, which is a great combination. Whether you see Heather, whether you see Jab We Met, whether you see even Kabir Singh, his characters penetrate more than his stardom, which is a very good thing. So I said, मुझे एक एक्टर चाहिए जो ये 2 घंटे की फिल्म को, एक रात की कहानी को होल्ड कर पाए. And then everything in the film is designed to him. Whether it's an action, whether it's the writing of the film, whether it's the intensity of the film, everything is, it's a headline film. It's like Bloody Daddy, Shahid Kapoor, you know. So सब कुछ उस किरदार से निकल के आया, you know. And that is why I think when people are finding it new age and लोगों को लग रहा है and they're drawing comparison, it's new because a new star is doing an action in a new way. Which is believable, which is raw, which is rustic. मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेन पिटता है, यहाँ हीरो भी पिटता है और हीरो को चोट भी लगती है और दर्द भी होता है, which is more the reality of the situation. Hi, शाहिद है। प्लीज एक सवाल है। हाँ, एक सवाल है। शाहिद जी, आपके किरदार ने बताया कि हर रात की एक कहानी होती है। बात तो सही है कि हर रात की एक कहानी होती है। ये तो अपनी पर्सनल लाइफ में मत जाना, TMI हो जाएगा। आपके रात की ऐसी कोई कहानी है जो आपके लिए मेमोरेबल है? मुझे पता था बेटा, खर्राटो वाली कहानी सुनोगे? हाँ जी बिल्कुल। खर्राटो वाली। ऐसी कोई ब्लडी डैडी की कोई कहानी है रात में? तू अपनी बता दे, तेरे मन में है कुछ कि मैंने किया था ना उस रात, वो सबको बता देता हूँ मैं आज। चलो यही रात करते हैं। शाहिद, कुछ सवाल पूछना था आपसे। एक्चुअली इसके बाद भी वो जो इस तरफ मतलब यू आर जस्ट वॉकिंग दैट पाथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। जी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन घर पे नहीं निकाल सकता,
सेट पे जाके निकालता हूँ. फर्जी was a warm up और अभी ब्लडी डैडी में full exposure. Shahid, to add घर to पे मैं her, डोमेस्टिकेटेड एकदम. Shahid, to add to her question. सबसे ज्यादा यही हंसा है इस सवाल पे, इसकी क्योंकि नई नई शादी हुई है ना, I can understand the emotion. Shahid, to add to her question, I would like to ask you, a new action hero is born. A new action hero is born. जी आपका सवाल है या आप हाँ। बोल रही हैं? ये आपका सवाल है। स्टेटमेंट है. आपका मतलब सवाल पूछ रही, do you agree a new action hero is born? मैं तो 3 साल पहले पैदा हो गया था, आज आप देख रही हैं. मैं तो 3 साल पहले कन्विंस था. We are totally convinced. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll wrap this up. There'll be lots more occasions that we do this. We'll do a little photo up. So we'll just